Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी प्लस 2 सेकंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारछि एबे मु प्लस 3 CBCS ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुडा अपलोड करिवि जदि भल लागिला ताले लाइक कर देबो एवं सब्सक्राइब कर देबो जो वीडियोज गुडा मु अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन पई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट कर देबो गोटे इंपोर्टेंट जिंस वीडियोज रो ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुछो तार क्वालिटी एठी देखो बाय डिफॉल्ट 360 अछि तमे ताकू पढे मध्ये परिबो एठी एडवांस रे क्लिक करी तमे रिजोल्यूशन बढ़े परिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देबी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रो तमे क्लिक करी डाउनलोड मध्ये करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तमे एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तमे सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज टॉपिक रे हमें एक्सटेंसिव आउ इंटेंसिव वेरिएबल्स विषय रे पढ़िबा तो देखो थर्मल फिजिक्स रे हमें स्टेट ऑफ सिस्टम जे कोनसी गोटे इंस्टेंट ऑफ टाइम रे ताकू रिप्रेजेंट करि परिबा डिपेंडिंग अपॉन इट्स कंडीशन एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम ओके ए जो स्टेट ऑफ सिस्टम याकू हमें रिप्रेजेंट करि परिबा बाय स्पेसिफाइंग सम ऑफ द external condition, that is your pressure, volume and temperature etc. So এই जो experimentally measurable quantities तीनटा हमें देखिला pressure, volume और temperature याकू हमें thermodynamic variable बा variables of state बोली की कहिबा okay and these variables are actually the physical quantities which are helping us to study the behavior of that thermodynamic system okay এই সিস্টম को हमें describe करि परिबा in terms of thermodynamic coordinates in a thermodynamic system and the system such as like your gases, vapor, steam, solid, liquid, surface films, then stretched wires, thermocouples, magnetic materials, electrical cells, all these are some of the examples of your thermodynamic systems okay so generally a thermodynamic system ei bhaliya thae when the variables which are characterizing a system do not change with respect to time okay जो variable टा change होनी time हिसाब रे आउ it is reproducible then the system is said to be in the condition of equilibrium state okay अच्छा थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स को जोटा हमें आज टॉपिक रे पढुछु एक्सटेंसिव आउ इंटेंसिव बोली दुई भाग रे हमें डिवाइड करि परिबा गोटे इंटेंसिव आ गोटे एक्सटेंसिव सो फर्स्ट इंटेंसिव वेरिएबल्स कहले एक्चुअली इफ द वैल्यू of a variable remains unchanged on the partition of the system then it is called intensive variables example temperature pressure then your surface tension ता छड़ा viscosity refractive index density emf okay so गोटे system suppose अछि this is our system a system ro as per the definition a system ro partition okay this is the partition so a partition रे आमर जदि सेई वैल्यूटा वेरिएबल रो जे कोनसी वेरिएबल रो वैल्यूटा जदि अनचेंज्ड बा कांस्टेंट रहउची ताहले हमें याकू इंटेंसिव वेरिएबल कहिबा ए पार्टीशन भितरे सेटा अनचेंज रहिला ओके अच्छा एक्सटेंसिव वेरिएबल माने कोन if the value of the variable of the whole system is equal to the sum of the values of the variables of each of the subsystem then it is called extensive variables माने गोटे सिस्टम अछि सिस्टम भितरे पुनी सब सिस्टम अछि ओके सब सिस्टम रे अलगा अलगा वैल्यूज रही पारे सेही पर्टिकुलर वेरिएबल रो जाहाकू कि हमें एक्सटेंसिव वेरिएबल कहउछु आ टोटल ए जो सब सब सिस्टम रो वैल्यू मिसई कि हमें टोटल वैल्यूटा पाइबा फॉर द होल सिस्टम सो एई प्रकार वेरिएबल को हमें एक्सटेंसिव वेरिएबल बोली कि कहिबा एग्जांपल हला लाइक योर एंट्रोपी वॉल्यूम इंटरनल एनर्जी ता सहित मास लेंथ एरिया हीट कैपेसिटी एंड चार्ज obviously electric charge okay now let us consider a homogeneous system which is having macroscopic parameter suppose y and let this system be divided into two parts by
introduction of a partition. Okay, suppose आमे कहला y1 ଆଉ y2 be the values of the parameter for the two subsystem. एटा जे कोनोसी variable हेई पारे. Okay, extensive भी हेई पारे, intensive भी हेई पारे. तेबे हमर जो मूल variable टा थिला y, जदि एटा extensive ताहले एटा relation को satisfy करथिबा कथा जे y must be equal to y1 plus y2. Okay, और नहीं जदि y होची intensive variable, then y must be equal to y1, which must be equal to y2. So এটা হলো basic difference between the extensive and intensive variables. Thus the intensive variable in thermal physics, actually they are independent of the mass and the number of particles. से mass जेते भी हो कि number of particles जेते थांतु तारी उपरे intensive variable depend करे नहीं. Okay, now let us say if x and y are any two intensive variables, then the physical quantities जदि हमें product नहीं जबा x y रो किंबा division कर देला x by y किंबा एमती differentiate कर दबा dx by dy किंबा simply add कर दबा x plus y, all these will also be the intensive variables. किंतु extensive variables कहले in thermal physics आमे जेमती देखिला they are proportional to the mass and the number of particles in the system. So subsystem भितरे सेटा depend करूची. Okay, आ total हेकी मूल तमरो extensive variable टा बाहरुची whole system रो. तो suppose capital X और Y हेगला any two extensive variables, then the physical quantities x plus y केवल extensive हेबो. But however जदि आमे divide करचु x by y किंबा differentiate करचु dx by dy, then they will be intensive. Okay, so similarly if the quantity x is an intensive variable ଆଉ quantity y is an extensive variable, ताहले देखो दुईटा अलगा अलगा ही गला. सो प्रोडक्ट जदि आमे नेबा x y रो किंबा रेशियो नहीं गला y by x किंबा differentiate करिकी dy by dx, all these will also be extensive variables. Okay, so এটা টিকে মনে রাখিবো. Now let us study the additive nature of entropy in order to distinguish between the intensive and extensive variables. Suppose we take a system which is consisting of two subsystems 1 and 2. Suppose आमे total entropy whole system पाई नेगला equal to S और total thermodynamical probability whole system रो याको नेगला W. ताले एज पर डेफिनेशन स्टैटिस्टिकली एंट्रोपी को आमे डिफाइन करि परिबा k ln w. ओके, अच्छा सपोज एठी आमे कहिला जे s1 आउ s2 होची एंट्रोपीज ऑफ द टू सबसिस्टम. सिमिलरली w1 w2 हेगला दे आर थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटीज रेस्पेक्टिवली. एठी हां गोटे जिंस ए जो k होची एटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. ओके, अच्छा ताले देखो एठी दुईटा सबसिस्टम आमे एठी फिगर रे देखुछु subsystem 1 and 2. Then according to the definition of entropy, S1 will be equal to k ln W1. Similarly, S2 will be equal to k ln W2. Now, as per the multiplication law of probability सबने multiplication रे हुए. So, the total thermodynamic probability of the whole system will be equal to the product of the thermodynamic probability of the two subsystem, that is W must be equal to W1 into W2. अच्छा एबे both side रे हमें simply natural logarithm नहीं जिबा. So ln W is equal to ln W1 W2. आमे जानी छु ln W1 W2 एटा ही जिबो केते ln W1 plus ln W2. ओके देखो से साइड रे ही गला. ताले एबे both side रे पुनी हमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट k को मल्टीप्लाई कर दबा. ओके, सो एठी ए जो वैल्यूटा बाहला दिस इज नथिंग बट इक्वल टू s इज इक्वल टू s1 plus s2. हेंस एठू जणा पडुची जे एंट्रोपी रो एडिटिव नेचर अछि. The total entropy of the whole system is equal to the sum of the entropies of the two subsystem. Okay, so this is the additive nature of entropy, and this result will remain valid
as long as the subsystems are in equilibrium. तो सपोज आमे कहला जे सिस्टम रे n संख्यक सबसिस्टम्स अछि ताहले टोटल एंट्रोपी ऑफ द होल सिस्टम याकू भी आमे एही हिसाब रे लिखि परिबा s is equal to s1 plus s2 plus s3 plus dot 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 and so on up to sn. Okay, now if the value of a parameter of the whole of the system is equal to the sum of the values of the parameter of each of the subsystem ताले हमें ताको कौन कहू ताको हमें extensive variable कहू as per the definition. Hence the entropy is an extensive variable. Similarly volume, area, length, internal energy এই ସବୁ गुड़ा मध्य other examples of your extensive your variables or extensive parameters. Okay, तापरे जदि गोटे value variable रो unchanged रहुची on the partition of the system then it is called intensive parameter or intensive variable. Example जेमति हमें देखला temperature, pressure, surface tension etc. Okay, these are also the intensive parameters. Okay, let us now see the table which is illustrating different variables in the various system. देखो first it is system, then intensive variable, extensive variable. Suppose आमे गोटे stretched wire नेला ताले intensive variable हेगला tension, then your एठी tension रे आमे एठी यार symbol f नीचु, then extensive variable हेगला यार length. अच्छा गोटे dielectric नेबा आमे solid, so एठी electric field intensity होउची intensive variable, electric dipole moment बा small p एटा होउची extensive variable. गोटे surface film रे surface tension टा intensive, area हला extensive. गोटे hydrostatic system रे pressure is intensive, volume is extensive. गोटे paramagnetic material रे flux density b is intensive but the magnetic dipole moment pm is extensive. गोटे electric cell बा battery रे potential difference रहुची intensive but charge is extensive. और शेष रे गोटे thermodynamic system रे temperature, pressure ये हला intensive और internal energy और volume हेगला extensive variables. So finally let us see when pressure is exerted by the gas in equilibrium and it is said to be intensive variable. काहेकि because the pressure will remain same everywhere within the gas. gas भितर सबु जगह रे pressure रो value टा समान रहिबो. अच्छा the quantity is like mass एटा vary करे depending upon the size of the system, so it is an extensive variable. Okay, गोटे system रे को जगह रे size केमती रहउची molecule molecule बा particle particle भितर distance केते रहउची तार density केते रहउची ताहाकू नै कि depend करे mass. तेणु करी एटा extensive variables. So remember that to every intensive variables there is an extensive variable which is a short of the counterpart and together they are known as the conjugate pair. Okay, so the product of every conjugate pair will have the dimension of work. And finally a point to remember that the internal energy U of a system is a conjugate pair in terms of temperature and entropy or pressure and volume. Okay, मने पकाओ आमे जो first law of thermodynamics ताकू आमे लिखि पारो dq is equal to du plus pdv. Okay, so এই जो dq को आमे लिखि परिबा tds. so এই जो internal energy इटा को आमे एक्सप्रेस करि परिबा in terms of temperature, entropy, pressure and volume. Okay, so এই জিনিসটা এठी এই পয়েন্ট রে সুচৌছি. Okay, so this is all about your extensive and intensive variables. Thank you.